Very good afternoon, one and all. Good afternoon. Here we are for our last session of our day, and the person who is going to talk about this topic is Rasia Shahid Mera, who is a board-certified assistant behavior analyst with a bachelor's in chemistry and education. Being a parent of a 26 years old young lady, she has been using the principle of ABA to build various skills in her daughter ever since she had been diagnosed with autism. She has an experience of 12 years working with kids under the spectrum from the age of 1.5 to 18 years. She has worked as a center in charge for 8 years and as an assistant clinical director for last 2 years at Behavior Momentum India. Her dream is to bring about a measurable positive change in the child that is beneficial for both the child as well as the child's social environment. Here, Madam will be talking or sharing her experience and knowledge on the topic on evidence-based strategies to reduce and replace maladaptive behaviors. I welcome you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, everybody. I hope you all had a good lunch. And I hope that you all are not sleepy, because this is a very important topic where we all struggle to reduce behaviors of our kids which are inappropriate. And to do this presentation, I will be having Atmika Krishnan assisting me. So a part of it she's going to present, and a part of it I'm going to be presenting. Atmika, all over to you. Hi all. I'm Atmika. I'll be presenting the screen in a minute. Is it visible for everyone in the full screen mode? Yes. The video screen? Yeah. Yes. You can play on the slide Sorry, share. that's fine. It's okay. Okay. So for the last 2 days, we have all learned about what ABA is and what we got to know about behavior and motivation, reinforcement, and antecedent-based intervention, and what is the function of the behavior and everything. So now we are going to mainly concentrate on consequence-based intervention for reducing maladaptive behaviors. Okay. So this slide is being like the first slide for past 7 sessions, because this ABC is so important and so basic. That's why every PPT you guys saw was having this as a first slide. So we all know that antecedent is something that comes before the behavior and consequence that comes after the behavior. This helps to identify that whether the behavior is going to increase or decrease or maintain in the step. So here, if we want to go, Excuse me, Atmika. we can't see Your second slide. Move to Oh, the second okay. slide. It's not. Okay, then I will share it from the slide side.
Sorry, give me a minute. There is a glitch. One second. Atmida, you want me to share the PPT? No, ma'am. It's done. I'm sharing it now. Is it visible now? Yeah, it's Am I in the second slide page? yeah, Yes, you yes. are on the second slide. Okay. Thanks. So, yeah, when we are going to work on the behavior, either on increasing or decreasing it, we have to have a look at what antecedent it is and what follows the behavior and what comes before the behavior. That antecedent and consequence is very important. So now in this session, we're going to see what and all the consequence strategies we can use in order to decrease the maladaptive behavior. Oh, sorry. So consequence we all know that follow if it happens immediately after the behavior, and if that is the one is going to influence the future frequency of the behavior, that is going to increase the behavior is going to increase or decrease, that's totally based on what consequence we are going to place. So we know what reinforcement is from the yesterday's session, and even if we know that, I'll just give you a brush up of what reinforcement and punishment is. So reinforcement, in it the behavior increases, and we have two type of reinforcement. One is positive reinforcement, where a stimulus is added to the environment, and in the negative reinforcement, some stimulus is being removed. So before jumping into the punishment side, I'll just go to the next slide to show you some examples for uh, positive and negative reinforcement. So here the first example is, seeing the biscuit on the shelf, Zara started to scream. So here the screaming is the behavior that we are going to look into. When the consequence for the screaming is, the mom immediately removed the biscuit and gave her the biscuit. So here the screening for the biscuit has increased. Uh, where when you have a look at the last column, here the biscuit is added to the environment, hence the behavior has increased. So this is a good example for positive reinforcement, where something is added to the environment and the behavior has increased. And we'll have a look at the second example. There is a pain in the stomach. We eat cuisine and the pain subsides. So here the eating of crozin for any other type of pain has increased because the pain is reduced. Something is taken away from the environment. Hence, the behavior has increased. So this is an example for negative reinforcement, where removing the pain explains the negative part, and behavior increase explains the reinforcement part. Okay, then we'll go back. Now we'll see what punishment is. In punishment, the behavior decreases. Okay, again, there is two types of punishment. One is positive punishment, again, something is added, and the negative punishment, something is removed. The stimulus is removed. We'll have an example. While doing academics, Priya pinches us. Okay, the third example we are going to look into. While doing academics, Priya pinches self. Teacher reprimands with a loud note. Pinching behavior decreased. So the pinching behavior has decreased while doing academic tasks. Here, the reprimand is added to the environment, hence the behavior has decreased. So here, the reprimand added is the positive part, and the behavior decreasing is the punishment part of the sentence. And then next, the fourth example is while playtime, Sonu hits appear.
he's hitting someone. The teacher sends her out of the playroom. So the hitting behavior has increased, sorry, decreased. So hitting behavior has decreased, yes. So here the playtime is being removed, hence the behavior has decreased, which explains that removing explains the negative word, and the behavior is decreased, which explains the punishment part. So I hope you guys understood both positive and negative punishment. Okay, now we'll move on to the next slide. Okay, here. Strategies for decreasing behaviors. So there are two main things we can do. We can either work on A or on C. We have already have had a session today morning uh, based on like antecedent-based interventions. Vijayata ma'am has beautifully explained it to us. Now we'll have a look at the consequence-based intervention. We know that reinforcement, punishment, extinction, differential reinforcement are part of consequences. Now we are talking about decreasing behavior. So we'll be explaining punishment, extinction, and differential reinforcement in this session. We will just move. So here, the first thing we're going to look into is punishment. Punishment is stimulus change that occurs immediately after the behavior, which reduce the future frequency of the behavior. So we have seen a couple of examples before. In punishment, the behavior should decrease. If it is not, then it's not going to be an effective punishment. The definition of punishment is the behavior should decrease in the future. Okay. Now we know that it has positive and negative types. So we'll have a look at what positive punishment types we have. We know that positive punishment, some stimulus is being added to the environment in order to decrease the behavior. So we'll just see what are all the types. The first one is reprimand. Reprimand is something we all use, or it has been used on us in lot of like throughout the life you would have experienced that. Reprimand is simply but a verbal command following the behavior of, for example, like stop doing it, stop it, or something like that. A verbal command that follows the behavior. Next, response block. In this, we are going to physically block the response by either by using any other objects, like say for example here we can have a good example of head banging. Head banging, when it's going to occur, you can block the head banging by putting a helmet or using some sponge boards or something in order to block the response from happening. Next, overcorrection. As the name suggests, we are going to correct the problem behavior. uh, for example, here I'll say if the kid is throwing out the paper worksheets in order to escape from it. So we are going to make the kid go pick up each paper and come sit back, and we will encourage them to work on it. So here we are going to make the child restore the environment that was already been there, and we are going to work on the worksheets. So that is recorrection. Next, contingent exercise. This is also something we all have encountered in our childhood, and that is the best example for this is sit-ups. Uh, we all would have done sit-ups for as a punishment for doing some naughty, mischievous things in our childhood. Say that is the best example for a contingent exercise. So these are all the positive punishment types. Now we'll move to the negative punishment, where something is removed and the behavior is decreased. So here the first one is response cost. Here, so small amount of reinforcement, positive reinforcement is removed in order to punish them. For example, you will get only half a bite of the chocolate, or you will get only 1 minute of screen time.
as a punishment. So you did so and so behavior. So I'm only going to give a 1 minute screen time for you. So the amount of reinforcement is reduced in order to punish them. The next, timeout from positive reinforcement. So we're going to remove the person or remove the positive reinforcement totally. Like we're going to remove the person from the desirable activity. Like we saw the example of playtime uh, where the kid hit the peer and she was taken out from the playtime, right? That's a good example for timeout. Next. So when we are implementing punishment, we have some ethics to consider while doing it. So those are some of those are like, do not harm the kid, like in any way. Do not harm the kid directly. Do not involve procedure that has an element of degrading or disrespecting to the client. So everyone a human being, even if it's an ASC kid or any other disability facing kid, everyone a human being and everyone have their own dignity. As a therapist or an educator, we do not have any right to invade that. So we should we should not disrespect them in any ways by implementing any such punishment or extinction or any other strategies. So next one is right to effective treatment. Every child, every client have their own right to have an effective treatment to enhance themselves with their life or for their life. So we should, whatever we should do, even it's punishment, it should affect them positively to live their life better. So the punishment should treatment should be safe, it should be ethical, and it should be effective to all the clients which we are implementing the punishment. The next one is, there are some disadvantages in punishment in following punishment strategies. Some of those are permission required before implementing the procedure. Yes, this is very important because it's not like I'm seeing a undesirable behavior and I'm swooping in with a punishment strategy. It's not going to work like that. We should have a proper data of it. We should have a strategy planned. We should have a permission from our supervisor or mentor to pursue this punishment strategy with the kid. So punishment is not for doing the punishment. We should have a proper permission first. Next, to be used only after positive reductive procedures have failed. There are lots of other positive behavior reduction procedures that we have seen today morning. Even if only after those strategies have failed, we should think about the punishment strategy. We should not directly go for a punishment uh, intervention. Next, while we perform this punishment strategy, it's very important that we are being monitored, supervised, or evaluated by the experienced person. Say, for example, a BCBA or BCBAB should be supervising us. It's not like everyone can do the strategy. It's very complicated and should be done with a proper supervision. Next, when we implement punishment procedures, there will be escapes, avoidance, aggressive behaviors, and all sort of other undesirable behavior will join the uh, kid. So we should be ready to encounter all those. We should be ready to face all those, and we should know what to do and when is the right time to do. We should be ready for those also. To be used only and only if the behavior is of danger to the client and or the environment the client is in, which includes his caretaker. So, if the behavior is of great danger for the kids, then only we should consider punishment. Or if he's having a self-injurious behavior, or he's hitting other kids or other person in his environment, which is
really harmful for himself or also for others. So at that time, that is a better time for implementing the punishment strategies. Next, I think this is the last slide for punishment. We'll move on to the next slide, which is extinction. So extinction procedure occurs when reinforcement of a previously reinforced behavior is discontinued or withheld. As a result, the frequency of the behavior decreases in the future. So in this, uh, we are going to withhold the reinforcer. The reinforcer can be anything. It can be a tension or tangible item or escape, or it can be anything. For so long, we will have been reinforced the behavior with that. But when we are going to implement an extinction strategy to reduce the behavior, then the reinforcement will be discontinued. That as a result of this, the frequency of the behavior will decrease in the future. We'll have a look into the table column. Extinction of behavior maintained by positive reinforcement. We know what positive reinforcement is. Something is added to the environment here. So crying behavior maintained by giving attention. So here crying is the behavior, attention is stimulus added to the environment. In extinction, while in extinction procedure is in place, we are not going to give the kid that attention. That attention will be removed. That is how the extinction is done in this part. Next, extinction of behavior maintained by negative reinforcement. Here, something is being removed in order the behavior has increased. So removal of worksheet contingent on head banging. So as soon as the kid bangs his head, the worksheet is removed. So that this is how it is done, right? So this is how the behavior is reinforced so far. So in extinction procedure, the worksheet is not going anywhere. It's not removed. It's right in front of the kid. He should be doing the work. After few number of sums, it can be removed. Next, extinction of behavior maintained by automatic reinforcement. So eye poking, a repetitive behavior maintained by automatic sensory stimulation. Okay. This in extinction procedure, the goggles was used to mask the contact with the eyes. So eye poking, there is some sensory stimulation in it. So the kid is repetitively doing it, and it is not socially mediated the reinforcement. It's an automatic reinforcement. So we can place a goggle uh, in order to reduce the behavior in the extinction procedure. This is how it is done for the automatic behavior. Automatic reinforced behavior. So moving on to the next slide, application of extinction. So we know what extinction is now. Now let's see how it is applied. Withholding all reinforces maintaining the problem behavior. We will have a problem behavior in mind. We would have collected lots of data regarding it. So now we are going to withhold all the reinforces that is being reinforcing the problem behavior, and withholding the reinforcement should be consistent even if the behavior is going to a peak or is improving or anything, but the withholding of the reinforcement should be consistent. And planning for extinction produced aggression. When a reinforcer is withheld, there will be other aggressive behaviors that will follow the problem behavior in order to get the reinforcement. So we should be ready, we should plan accordingly to face all those aggressive behaviors and increase the number of extinction trials. So it's not like a short process where you can achieve it within a session or two. It is going to take some time. So the number of trials of extinction should be increasing according to the need, according to the data, including significant others in extinction. So if I'm going to work on one particular problem behavior and I'm going to implement extinction procedure,
I will be including all the other human beings the child encounters. Say, for example, their parents, caregivers, other staff person, driver and nurse, etc. So I will try to involve them also. I will just ask them to, if I ignore or do not give attention for some the particular behavior, the problem behavior, especially I'm working on, so that uh, a minimum like so that the extinction is being done in all other uh, settings or by all other people. The last point is combining extinction with other procedure. This is being highlighted because this part of the slide, which is coming in the future, will be explained by Razia ma'am. So I'm jumping to the next. Now, we got to know what extinction is. We also applied extinction. Now we'll just see what happens, what effects the extinction is having on the kid. So there will be gradual decrease in frequency and amplitude of the behavior. Yes, we know the behavior decreasing strategy. So the behavior will decrease gradually. But first, there will be an extinction burst. So I would like to explain extinction burst from the child's point of view, because that will be much better to understand. Say, for example, I am the crying child. Uh, so my therapist is planning an intervention on me for stopping the cry. So I am crying, and so far the my learning history for crying is, if I cry, she will give me attention. She'll run to me and ask what happened and do all such things. So that is my learning so far. So when the extension is being placed, when I cry, she will not look at me, or she will not give attention, or she will not come towards me. So what I will do is I'll shout, or I'll increase the duration of crying, or I can actually go in front of her, go very close to her face, and I can cry and shout, or I can make her look at me, or I can, roll in the ground in order to gain the attention. So these are all other behaviors joining, and the again the whole crying is going up. So this is called extinction burst. When reinforced when behavior is being reinforced for very long, and when you withhold the reinforcer all of a sudden, there will be a uh, extinction burst where the behavior will increase to a peak, which is very temporary and will be reduced after few trials. Even at this peak, or even at this burst time, the therapist should consistently withhold the reinforcer. Not at once, you should not reinforce the behavior. You should be very talented to avoid such behaviors. So yeah, the next thing is initial increase in response amplitude. Yeah, we just saw that extinction burst. Next, both extinction and punishment may produce unwanted side effects. Yes, I have explained that also. Some other behaviors will come join the inappropriate behavior. So far, the kid would only cry for that attention. Now she's shouting, she's rolling the ground, she's coming close to my face, she's pulling my hand. These are all the other side behaviors that will add with the already have the problem behavior. Behavior with a long history of reinforcement may produce maladaptive emotional behavior and a higher than usual rate of responding. Yes. So behavior which is having a longer history of reinforcement will be like bit hard for us to implement extinction, because the learning history of reinforcement will be very long. When you place a extinction and withhold the reinforcement, there will be a very big burst, extinction burst. So we should be ready for those. The next, spontaneous recovery. Spontaneous recovery is reoccurring of those behaviors we have been working. Sorry, reoccurrence of previously reinforced behavior. That is the spontaneous recovery. I'll just move on to the next slide so that you can have a good vision of it. So this is an extinction graph where for few
scenarios the behavior is like uh, maintained or it's in the same level. And when the reinforcement is removed, as I discussed, the extinction burst occurs. The behavior goes to a peak and then gradually decrease. And now the extinction is occurring and the behavior is reducing. And when there is this behavior which we are putting into the extinction is a very learned behavior. It has a very big learning history for it. So it will be easy for the behavior to come back. Even providing one little reinforcement for that behavior will bring back the whole behavior. That is the possible explanation for spontaneous recovery. So by saying so, this will be the last slide I am explaining. Now I am moving on to the next slide from where Razia ma'am will be explaining. Thank you. Thank you, Atmika. Okay, so before I proceed, मैं जानना चाहती हूँ आप लोग सबसे कि जो भी आत्मिका ने आप लोग को अभी बताया है उसमें कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है जो आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिपीट. इफ यू कैन मैसेज मी इन द टेक्स्ट बॉक्स, आई विल रीड ओवर एंड आई विल रिपीट दोस पार्ट्स. नहीं तो मैं मैडम. यस हेलो मैडम. यस मैम यदि मैडम थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करती तो हम लोग को ज्यादा इजी हो जाता था. कोई बात नहीं. क्या होता है, हम सब इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, पर अब जी आई मैम. विल ट्राई टू कम बैक. इसलिए आप लोग बताइए कहाँ आप लोग को नहीं समझ में आया, तो मैं वो कोशिश करती हूँ. मैंने इसलिए आत्मिका इनफैक्ट हेल्प इसलिए करी कि आई एम हैविंग अ लिटिल कॉफ, बट आई डोंट माइंड. अगर आप लोग बेयर कर सकते हैं, अगर मुझे थोड़ी बीच में खांसी आएगी, जस्ट गिव मी अ ब्रेक, आई जस्ट हैव अ सिप, आई विल रन थ्रू. मैं सब आपको वापस से चाहिए तो समझा सकती हूँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, हमको क्या नहीं समझ में आया है उसमें. पनिशमेंट, Atmika, can you go back to the punishment slides? Yeah, ma'am. One second. Yeah. अभी ये एक एक करके स्लाइड्स गो थ्रू करेगी. आप बताइए इसमें कौन सी आपको नहीं समझ में आई. प्लीज गो अहेड, तो मैं समझाऊंगी. एवरीथिंग इसमें क्लियर है. देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्स पनिशमेंट. पनिशमेंट इतना याद रखो, जब भी आप कोई भी परिणाम देने के बाद अगर वो बिहेवियर कम हो रहा है तो ही वो पनिशमेंट कहलाता है, नहीं तो वो पनिशमेंट नहीं होता है. ये बात आपके दिमाग में डाल दो. पनिशमेंट वही होता है जिससे बिहेवियर डिक्रीज होगा. ओके. अब पॉजिटिव पनिशमेंट हम तभी बोलते हैं कि जब बिहेवियर डिक्रीज हुआ और वो डिक्रीज लाने के लिए हमने कोई परिणाम ऐड किया, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया, तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होता है. नेगेटिव पनिशमेंट वो होगा जिसमें आपने कोई परिणाम को निकाला एंड जिससे बिहेवियर डिक्रीज हुआ, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है. तो रेप्रीमैंड मतलब हम बच्चों को अक्सर हम बोलते ना, फॉर एग्जाम्पल बच्चा छुरी उठाने नहीं, मत छुओ, जोर से चिल्लाते, उसको बोलते हैं रेप्रीमैंड. ओके. तो यहाँ क्या ऐड किया हमने, हमारा जोर से बोलना ऐड किया. और क्योंकि हमने जोर से बोला, आइंदा से बच्चा छुरी पकड़ने जाता है तो उसको याद आती मम्मी की डांट, वो छुरी नहीं पकड़ता है. दैट्स रेप्रीमैंड. ओके. रिस्पॉन्स ब्लॉक इज हम उस रिस्पॉन्स को नहीं होने के लिए कुछ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने देखा है बच्चे लोग ऐसे 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 करते रहते हैं. ओके ना, ये करते रहते हैं. अब ये करना उनको नहीं पता कब वो लोग एक्स्ट्रा कर दें, आँख को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये बिहेवियर नहीं होने के लिए हम गॉगल्स पहनाते हैं. ओके. तो ये गॉगल्स हमने ऐड किया. अब गॉगल्स पहनाने के बाद वो बच्चा ये बिहेवियर तो टच आईज कमती रिड्यूस हो जाएगा. तो ये गॉगल्स जो हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद आईज को टच करने का बिहेवियर कमती हुआ है. सो दैट्स रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग. एंड क्योंकि हमने गॉगल्स ऐड किया, बिहेवियर कमती हो गया, इट्स पॉजिटिव पनिशमेंट. ओके.
ओवर करेक्शन इज हम वही बिहेवियर को बार बार करवाते। सिंपल आपको बताती हूँ, इन न्यूरोटिपिकल किड्स हम ये बहुत करते हैं। हमने बच्चे को 3 सम्स दे दिया करने एडिशन के, अभी वो 3 में से उसने एक सही किया, 2 गलत किया। अब वो 2 गलत किया कि सही नहीं किया, हम उसको और एक्स्ट्रा देते हैं कि नहीं और करो जब तक सब सही नहीं होता है। सो दैट्स ओवर करेक्शन। हमने और सम्स ऐड किया, और सम्स ऐड करने के बाद क्या हुआ, उसका जो रॉन्ग करने का बिहेवियर सम्स का कमती हो गया। So basically overcorrection is adding something to reduce the behavior. Contingent exercise is अगर बच्चे ने कोई behavior जो हमको नहीं चाहिए and बच्चा ने वो किया, तो उसके बाद हम उसको कुछ ओके यहाँ भी मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार स्कूल में हुआ है कि बच्चे ने लाउडली स्क्रीम किया, तो टीचर ने क्या बोला, जाके सामने जाके कान पकड़ के 10 बार उठ करा दो। Okay, so this is a very simple common example जहाँ बच्चे का कोई बिहेवियर की वजह से टीचर ने उसको कुछ एक पनिशमेंट इस तरह का करने बोला। अब वो पनिशमेंट उसको मिला बिकॉज ही मे बी स्क्रैम्ड, चिल्लाया क्लास में, तो आइंदा से वो नहीं चिल्लाएगा क्योंकि उसको ये पनिशमेंट याद रहेगा। सो अगेन पनिश दिस एक्सरसाइज, कान पकड़ के ऊपर नीचे होना, वो एक एक्सरसाइज ऐड किया था टीचर ने, एंड उस एपिसोड के बाद बच्चे का स्क्रीमिंग इन द क्लास रिड्यूस हो गया। सो दैट इज व्हाई इट्स पॉजिटिव पनिशमेंट। ये सब एग्जांपल्स आई होप अभी क्लियर है आपको। एनीबडी एनी डाउट्स? मैं आगे बढ़ूं? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। नेगेटिव पनिशमेंट है जहां हम कुछ निकालते हैं। ओके, तो अब आई एम गिविंग यू जितना हो सकता है मैं नॉर्मल एग्जांपल्स आपको देती हूँ। तो रिस्पॉन्स कॉस्ट क्या होता है? ओके, हर दिन पेरेंट्स बच्चों को बांध के रखते हैं कि तुमको 30 मिनट्स का टीवी टाइम मिलेगा। ओके, अब जब मम्मी घर पे आती, मम्मी बोलती है अरे तुमने तो होमवर्क नहीं किया, आज मैं तुमको 30 मिनट्स टीवी नहीं दूंगी, मैं तुमको सिर्फ 10 मिनट टीवी दूंगी। तो दैट्स रिस्पॉन्स कॉस्ट। ओके, तो क्या होगा, क्या हुआ, टीवी टाइम निकल गया। अब क्योंकि टीवी टाइम निकल गया, द चाइल्ड इज लर्निंग कि नेक्स्ट टाइम मम्मी आने से पहले मैंने मेरा पूरा होमवर्क खत्म करना चाहिए, नहीं तो मेरा टीवी टाइम चला जाएगा। तो वो बिहेवियर ऑफ नॉट लीविंग द होमवर्क इनकम्प्लीट डिक्रीज। ओके, तो फिर यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव पनिशमेंट। टाइम आउट फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज, लेट्स टेक प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। ओके, अब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का बाल खींचा, इमीडिएटली टीचर ने क्या बोली कि ओके तुमने बाल खींचा, जाओ तुम वो कोने में खड़े हो जाओ। ओके, तो दैट चाइल्ड, वो लड़की जिसने बाल खींची, शी इज बीइंग रिमूव फ्रॉम दैट सोशल प्ले एनवायरनमेंट। वो सोशल प्ले एनवायरनमेंट उस फॉर दैट गर्ल से निकाला गया। एंड अब नेक्स्ट टाइम वो बाल खींचने से पहले सोचेगी, उसको याद आएगा कि नहीं टीचर ने मुझे वहां भेज दिया था, मैंने बाल खींचा था, तो उसका बिहेवियर और बाल खींचना किसी का कमती हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट निकाला गया था फ्रॉम दैट गर्ल, तो दैट्स नेगेटिव। ओके, एंड क्योंकि बिहेवियर डिक्रीज हुआ, दैट्स पनिशमेंट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। एनी एग्जाम्पल्स, एनीथिंग फर्दर आप लोग को चाहिए मैं समझाऊं? इधर हम आगे बढ़े। ओके, टेक टू एक्सटिंक्शन आत्मिका। मैम, व्हाई इज दिस नेगेटिव इन टीवी टाइम प्रेशर? No, the behavior, if you are looking at, I'm looking at the behavior of leaving the work incomplete. So that behavior is decreasing. It is always, whether it is a reinforcement or a punishment, that depends on the definition of your behavior.
Now the behavior that I gave you the example is the behavior definition is of leaving the work incomplete. So that is why it will come as punishment procedure, because the behavior for leaving the whole task incomplete is decreasing. Okay, Debelina? So let's go to extinction. Okay, one thing आप लोग को extinction का बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज उस बिहेवियर को, जो बिहेवियर हम नहीं चाहते हैं, उस बिहेवियर को मेंटेन कर रहा था, हम उस चीज को निकाल रहे हैं. ओके, दैट इज एक्सटिंक्शन. विद होल्डिंग, हम वो चीज नहीं दे रहे हैं, दैट इज एक्सटिंक्शन. पर अक्सर बोला जाता है कि अच्छा अभी इसका क्राइम एक्सटिंक्शन पे चला गया है. नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते. हम क्राइम बिहेवियर एक्सटिंक्शन पे तभी बोल सकते हैं जब वो क्राइम बिहेवियर जो मेंटेन, जिस वजह से मेंटेन हो रहा था, उस चीज को हमने हटा दिया एंड बिहेवियर रिड्यूस हुआ. दैट इज व्हाट. सो एक्सटिंक्शन इज बेसिकली विदहोल्डिंग जो चीज बिहेवियर को मेंटेन कर रही थी. एग्जाम्पल्स पे ही देती हूँ आपको कि a child every time is raising the hands up, okay, and every time when the class is not screaming and raising the hands up, okay, teacher is giving them stars. Okay, so everybody in the class, okay, is now very quiet. They are all raising hands. For whenever they want to talk, they are raising hands and teacher gives them star. Okay, now अगर टीचर ने स्टार देना बंद कर दिया तो क्या होगा? बच्चे हाथ ऊपर करें, टीचर स्टार नहीं दे रही, फिर क्या होगा? So I think this is not a proper. I will explain you another way. Okay, so for example, okay, let me go other way around. बच्चा टीचर का in the class to get teacher's attention, child is telling miss 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 ऐसे कर रहा है. Okay, घड़ी घड़ी. और एवरी टाइम वो बच्ची ऐसे करती मिस मिस, टीचर बोलती यस, क्या चाहिए, क्या हुआ, जवाब देना है. सो एवरी टाइम टीचर इज गिविंग अटेंशन. ओके, अब हमको ये बिहेवियर हटाना है बच्चे का. तो हम क्या करेंगे? जो टीचर का जो अटेंशन था उसको हमेशा टीचर अटेंशन देती थी. जब भी वो मिस 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 करके ऐसे सीट पे ऊपर नीचे होके मिस 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 करती थी, टीचर अटेंशन देती थी, वो अटेंशन को टीचर अभी हटा देगी. तो वो मिस 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 करते रहेगी, टीचर वो अटेंशन नहीं देगी. सो विदहोल्डिंग दैट अटेंशन, ओके, इज एक्सटिंक्शन. एंड जब हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स द बिहेवियर डिक्रीजेस. क्या होगा? वो आज ज्यादा थोड़ा चिल्लाएगी, ओके, दूसरे दिन करेगी, तीसरे दिन करेगी, पर चौथे पांचवें दिन बोलेगी टीचर तो अब ध्यान ही नहीं दे रही, तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर रिड्यूस होगा. तो ये एक्सटिंक्शन है. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? एवरीबडी, सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया. Okay. तो shall we go to differential reinforcement सीधा? Atmika. Yes, ma'am. Thank you. Okay, differential reinforcement अगर हम हिंदी में बोलने जाऊं तो अंतर शुद्धिकरण. मैंने ट्राई किया to get these all terms in Hindi for y'all. Okay, so in differential reinforcement हम तभी कहते हैं जब हम एक बिहेवियर जो हम नहीं चाहते हैं, जो ठीक नहीं है, हम उसको रिड्यूस करके उसके अलावा दूसरा बेटर बिहेवियर बिल्ड करना चाहते हैं. तो जो हमको रिड्यूस करना है वो बिहेवियर क्या होता है? किसी वजह से पहले हमने उसको ध्यान दिया होगा, अब हम उस बिहेवियर को नहीं ध्यान देते हुए दूसरे बिहेवियर जो सही है, जो अच्छा है, उसको रीइंफोर्स करते हैं. तो दिस इज डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट.
So the differential reinforcement procedures are basically when you are withholding reinforcement for one type of behavior. तो आप जो एक behavior है जिसको आप पहले reinforce करते थे, उस behavior को आप नहीं reinforce करके दूसरा सही behavior, अच्छा behavior को reinforce करते हैं. ओके, अब इस डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के 3 मेन तरीके हैं. हर एक तरीके को हम एक एक करके जाएंगे तो आपको एग्जांपल्स के साथ बराबर समझ में आएगा. आत्मिका नेक्स्ट प्लीज. ओके, तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट 3 तरीके हैं. डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेट बिहेवियर, differential reinforcement of incompatible behavior, differential reinforcement of any other behavior. तो alternate मतलब इसके अलावा. ओके, इनकम्पैटिबल मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. ओके, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर मतलब दूसरा बिहेवियर. इसके ऑल्टरनेट इज अलावा, इनकम्पैटिबल मतलब दोनों साथ में नहीं हो सकता है, और अदर मतलब दूसरा बिहेवियर. तो ये 3 मेन तरीके हैं जिससे हम यूज करके हम जो बिहेवियर नहीं चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं, एक एक का लेके हम एग्जांपल्स लेके we'll run through that. So let's look at differential reinforcement of alternate behavior. Okay, differential reinforcement of alternate behavior. पहले मैं ये पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ कि करके. A procedure for decreasing problem behavior. तो ये procedure है जहाँ हम problem behavior decrease करते हैं, in which reinforcement is delivered for a behavior that serves as a desirable alternative to the problem targeted behavior for reduction and withheld following instances of problem behavior. तो जब आप एक alternate behavior की strategy, differential reinforcement of alternate behavior strategy यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस बिहेवियर का वजह क्या है. ओके, क्या वो कुछ बच्चा मांगना चाहता है या कुछ करना नहीं चाहता है, क्या है. ओके, तो जो फंक्शन है, ओके, उस फंक्शन को लेते हुए उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल, ओके, सेल्फ हिटिंग व्हेन वर्कशीट्स आर गिवन. अभी बच्चा वर्कशीट नहीं करना चाहता है, तो जब भी वर्कशीट दिए, टीचर वर्कशीट आगे करती है तो बच्चा सीधा अपने आप को मारने लगता है. ओके, तो अब एक्चुअली जब उसको वो चाहता क्या है, फंक्शन क्या था, उसको वर्कशीट नहीं करना है. ओके, तो मारने के बदले हम उसको एक ऑल्टरनेट बिहेवियर सिखा रहे कि बोले ब्रेक दो. ओके, सो यहाँ वजह क्या थी, ब्रेक दो का मतलब भी नहीं करना है, अपने आप को मारना है भी वो बच्चा कहना चाहता है मुझे नहीं करना. ओके, मार रहा है क्यों, क्योंकि उसको वर्कशीट नहीं करना. तो वो मारने के बदले वो हमको बोले कि मुझे नहीं करना है, या एक ब्रेक का कार्ड टच करके बता दे, समझा दे हमको कि मुझे नहीं करना है, एंड हम उसको नहीं करने देंगे. So teaching the child the right appropriate alternate way of asking or doing that particular task is alternate behaviors, differential reinforcement of alternate behaviors. तो यहाँ we provide reinforcement for the alternate, जो सही behavior है उस behavior को हम reinforce करते. तो जब बच्चे के पास वर्कशीट दी गई थी, तो जब वो बच्चा मारने जाता है, उसको इमीडिएटली हाथ लेके ब्रेक कार्ड टच करने या बोले ब्रेक, एंड द मिनट वो रिपीट करे, टच करे, हम उसको ब्रेक दे देंगे. तो यहाँ हमने जो ब्रेक चाहिए वो बच्चे का रीइंफोर्समेंट था, वो उसको चाहिए था, तो हमने वो दे दिया. कब दिया, उसने जब ब्रेक कार्ड टच किया या ब्रेक कहा, तब हमने उसको ब्रेक दे दिया. तो reinforcing any other behavior that has the same function. तो इसमें चाहे वो बोले, चाहे वो ब्रेक कार्ड टच करे, चाहे वो ब्रेक साइन बताए, whatever it is, पर वो ही चीज बता रहा है जो वो कहना चाहता है, मुझे नहीं करना. तो ब्रेक साइन करके बताए कि मुझे नहीं करना, या ऐसे करके बताए नहीं करना, या बोले ब्रेक. ओके, व्हाटएवर इट इज. तो जो भी तरीका हो, बट
वो तरीका सेम होना चाहिए जो हिटिंग से वो बताना चाहती है। ओके, टैपिंग टेबल हार्डली फॉर चिप्स। तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी बच्चे को चिप्स चाहिए, टेबल बैंग करता था। जैसे ही बच्चा टेबल बैंग करता था, पेरेंट उसको चिप्स देते थे। अब बैंगिंग करके मांगना तो सही तरीका नहीं है, राइट? तो अब हमको उसको ऑल्टरनेट तरीका सिखाना है मांगने के लिए। तो जब भी चिप्स सामने रखा, द मिनट ही गोज टू बैंक, हम उसको प्रॉम्प्ट करेंगे से चिप्स, या साइन करने लगाएंगे चिप्स, या कार्ड का पिक्चर, चिप्स का कार्ड पिक्चर बता पिकअप करने लगाएंगे। एंड द मिनट ही डज विथ प्रॉम्प्टिंग, भले ही प्रॉम्प्ट ही है, कर लिया, हमने उसको चिप्स दे दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये न्यू बिहेवियर जिसमें आइदर वो साइन कर रहा है या चिप्स बोल रहा है, इस न्यू बिहेवियर को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, टैपिंग टेबल उसको समझ में आएगा कि ये करने से तो चिप्स नहीं मिल रहा, पर मैं ये ऐसे करूंगा, कर रहा हूँ, या मैं चिप्स बोल रहा हूँ तो मुझे चिप्स मिल रहा है। तो अगर मुझे चिप्स खाना है तो मैं क्या करूँ, ये करूँ या चिप्स बोलूं। सो वी आर टीचिंग द ऑल्टरनेट बिहेवियर। क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, आपकी का नेक्स्ट। ओके, यहाँ थोड़े और एग्जांपल्स मैंने लिखा है। तो अगर एक अभी आप लोगों को कंडीशंस पता है, आप लोग ने कल भी देखा है कि बिहेवियर्स किस वजह से होते हैं, टैंजिबल्स, एस्केप, अटेंशन। तो अगर मैंने यहाँ टैंजिबल्स लिखा है तो आपको समझ में आ रहा है क्या है? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ यही चिप्स के जैसा ही एग्जांपल डाला है मैंने। ज़ारा बैंग्स द टेबल, जब भी वो कुकीज देखती है, टेबल बैंग करती है, इमिडिएटली मम्मी आके उसको कुकी देती है। ओके, अब डीआरए जब आपको अप्लाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जब वो टेबल बैंग करने जाती है, तभी मम्मी उसको बोलती है से कुकी। वो कुकी बोलती है, मम्मी उसको कुकी दे देती है। तो इस तरह से घड़ी घड़ी मम्मी प्रैक्टिस करती रहेगी तो क्या होगा, उसका कुकी मांगना बढ़ेगा, स्क्रीमिंग, बैंगिंग टेबल डिक्रीज होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ऑन पुटिंग फोर्थ, ये भी एकेडमिक्स का ही है। जहां हमने वर्कशीट डाली तो चाइल्ड स्क्रीम करता है, सब वर्कशीट्स फेंक देता है। तो दैट मीन्स वो वर्कशीट फेंकना, ओके, मीन्स ही डज नॉट वांट टू डू। और टीम मम्मी क्या करती थी, जब वो वर्कशीट सामान उठा के फेंकता था, मम्मी फट से सामान हटा देती थी, भाई ये भी फेंकेगा, एंड शी वुड रिमूव द टास्क। ओके, अब जब डीआरए करना है हमको, हम जैसी वर्कशीट रखे तो बिफोर द चाइल्ड इज जस्ट गोइंग टू थ्रो, हम उसको प्रॉम्प्ट करेंगे बोलने को कि से ब्रेक या साइन ब्रेक। द मिनट ही डज दिस, ओके चलो हम सब हटा दिए, तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा कुछ भी फेंकने को। तो व्हाट विल ही लर्न, instead of throwing, I just do break sign or ask for break, I'm getting it. Okay, so asking for break increase होगा, throwing materials, task materials decrease होगा। अब attention, every time when mom is occupied with the work, Zara screams, mom drops her works and attends to her। तो जब भी मम्मी बिजी होती है और ज़ारा चाहती है कि अपनी उसकी मम्मी उस पर ध्यान दे, वो चिल्लाना चालू करती है, इमीडिएटली मम्मी काम छोड़ के उसके पास आ जाती है। अब मम्मी का अटेंशन चाहिए, तो स्क्रीम करके तो हर कितना देर, एक इट्स रॉन्ग वे ऑफ कॉलिंग आउट मदर। सो नाउ वी नीड टू उसको सिखाना है कि सही वे से मम्मी को बुलाओ। तो अब जब मम्मी पर्पसली अपने आप को बिजी दिखाएगी कि वो बिजी है, एंड द मिनट ज़ारा स्क्रीम्स, वी प्रॉम्प्ट हर टू से कि से आइदर मम्मी को टैप करे या बोले बोले मम्मा। ओके, व्हाटएवर जो भी बिहेवियर चाइल्ड का कैपेबिलिटी में है, हम वो करेंगे। एंड जैसे ही वो करती, बच्ची करेगी, ज़ारा करती, हम मम्मी अटेंशन देगी। तब तक मम्मी ऐसे करेगी जैसे वो बिजी है। तो इससे क्या होगा, मम्मी को कॉल आउट करना या मम्मा को टैप करके बोलना इंक्रीज होता है, स्क्रीमिंग रिड्यूस होता है। सो दिस इज डीआरए, जहां हम ऑल्टरनेट सही बिहेवियर सिखा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, डीआरआई। अच्छा, दीज आर सम वीडियोज दैट आई हैव, मैंने डाला है आप लोग को देखने के लिए। कैन यू प्ले वन?
just pause. आत्मिका just pause. Okay, so अब ये behavior क्या है? ये बच्चा जब भी washroom use करता है, after using a washroom, the tissue, she is not throwing, she will come out screaming and giving it to mama. अब क्या ये right behavior है? जो हम washroom में tissue use करते हैं clean करने के लिए, डस्टबिन में फेंकने के बदले वो जाके बाहर हर टाइम मम्मी को देती है. तो अभी हमको वो चाहती क्या है कि ये टिश्यू कहीं भी डाले, पर वो सही से खुद नहीं डाल रही, मम्मी को एवरी टाइम आ करके चिल्ला रही. अब वो मम्मी उसको ऑल्टरनेट बिहेवियर सिखा रही है. देखिए. Put in toilet. Put in toilet. In toilet. Flush toilet. Flush toilet. Great job! You put it in the toilet and you flushed. That is awesome! Great! Good job, sweetheart. In toilet. Flush. Great! You put it in the toilet and you flushed. Awesome! No, there. Yes. Good job! You put it in the toilet and you flushed. Excellent! Yay! Good! Look at you go, girl! You put it in the toilet and you flushed. Here you go. A great big chip for you. Awesome. In the toilet and you flushed. Yay! Okay, so you can see कैसे by the 4th episode the child learned to take the, instead of bringing that वो गंदा टिश्यू मम्मी के पास लेके आने के बदले वो कमोड में के उसको फ्लश कर दे. तो बिहेवियर क्या था कि वो डाल के फ्लश कर दे, पर वो नहीं कर रही थी, बट वो मम्मी को लाके स्क्रीम कर रही थी. पर अब इस तरह से कैसे we taught her the alternate correct behavior and every time उसने वो जो सही behavior किया उसको reinforcement मिला. तो क्या सीखा उसने कि ओके वो टॉयलेट पेपर को कमोड में डाल के फ्लश करना. ओके, आत्मिका सेकंड वीडियो प्लीज. So Just a minute, she's playing it. Nicely to be all done and reinforce. touch head. Touch head. You could say all done. Okay. You can pick something else. ओके आत्मिका पास पॉज. सो अब क्या हुआ, ये बच्चे को वर्क नहीं करना है तो क्या कर रही है, वो रो रही है. ओके, वाई टू क्राई, सीधे बोल दो ऑल डन, टीचर छोड़ देगी. एंड ये दिस इज एस्केप फ्रॉम टास्क. ओके, तो मुझे काम नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ क्राइंग आई से ऑल डन एंड मुझे छूट मिल जाती है. तो व्हाट डज द चाइल्ड लर्न? ओके, जब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, मुझे आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ टास्क, I tell all done and I'll get to go rather than crying. Okay, any doubts here? No, ma'am. Okay, so Atmika, next slide. Ma'am, are they doing internet video sessions? No, Neetu, this at times might require some, for some kids, एक you know एक ही दिन में फर्क दिखता है, कोई 2-3 दिन में लगता है, वो चाइल्ड स्पेसिफिक होता है. ओके, वो नॉट नेसेसरी कि सिंगल सेशन में हो
कोई कोई सिंगल सेशन में हो जाते हैं, किसी को 1 दिन 2 दिन लगते हैं, डिपेंड्स पास्ट में वो बिहेवियर कितना स्ट्रॉन्ग था। ओके, आई होप मैं आप मेरा जवाब आपको समझ में आया। repetitions are done with no some, कहीं कहीं हम कर सकते हैं, ओके कहीं कहीं नहीं कर सकते। अब ये चीज है, ये तो हम थोड़ी हर टाइम बच्चा टॉयलेट जा रहा है तो आई मीन ये बिल्ड करने के लिए घड़ी घड़ी हम उसको टॉयलेट तो नहीं देख सकते, पर जब भी ये हो रहा है तभी हम इस तरह से वर्क करते हैं। बट कोई कोई बिहेवियर के लिए हम रिपीटेड ट्रायल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड उस पर वर्क कर सकते हैं। सिंपल है, अगर आस्किंग फॉर चिप्स, ओके फॉर एग्जांपल चाइल्ड बैंक कर रहा है चिप्स के लिए, तो ये ट्रायल्स हम रिपीटेडली कर सकते हैं। देन एंड देयर चिप्स टेबल पे द मिनट वो बैंक करने जाता है, हम उसको बोलते हैं चिप्स बोलो, वो चिप्स बोलता है, हम उसको दे देते हैं। वो चिप्स थोड़ा सा खा लिया, अब वो वापस देखेगा चिप्स है, वापस चिप्स लेने के लिए वो वापस बैंक करने जाएगा, हम उसको वापस प्रॉम्प्ट करते हैं चिप्स बोलो, वो चिप्स बोलता है, हम उसको देते हैं। धीरे धीरे बाय डूइंग रिपीटेड trials in that particular session, probably some kids come up with the word, some will take 1 day, 2 day, 3 days. It is all child specific. Okay, ओके अब जाते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स। इनकम्पैटिबल मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब मैं नाखून भी काट नहीं सकती हूँ, जब मैं नाखून काट रही हूँ तभी मैं लिख नहीं सकती, आइदर मैं लिख रही हूँ या मैं नाखून काट रही हूँ, दैट इज इनकम्पैटिबल। ओके, तो incompatible differential reinforcement of incompatible behaviors, it is a decreasing problem behavior strategy जिसमें हम reinforcement deliver करते हैं एक ऐसे behavior को जो वो दूसरे behavior के साथ incompatible हो, वो एक साथ वो दो behaviors नहीं कर सकते। ओके, तो वो उस तरह का alternative देखते हैं, तो हम रीइंफोर्समेंट उस ऑल्टरनेटिव बिहेवियर को दे सकते हैं जो वो बिहेवियर जो हो रहा है उसके साथ हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग करने के बदले मैं नाखून काट रही हूँ, तो अभी मेरा नाखून काटना अगर मुझे रिड्यूस करवाना है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कीप माय फिंगर्स ऑक्यूपाइड कुछ और काम से। अगर मेरे फिंगर्स कुछ और काम से ऑक्यूपाइड है, चाहे वो फोन पे खेलने का हो या सिलाई करने का हो या कटिंग करने का हो, तो अगर मेरे हाथ फिंगर्स इस काम में ऑक्यूपाइड है तो मेरा ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम होगा। तो अगर मेरा बाइटिंग डिक्रीज करना है तो मेरा हर एक बिहेवियर जहां मैं मेरे ये फिंगर्स को ऑक्यूपाई कर रही हूँ उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। तो जब आप वो बिहेवियर्स जो मैं मेरे हाथ ऑक्यूपाई कर रही हूँ उस टाइम उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली मेरा माउथ में हाथ रखना कमती हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव टू एक्सप्लेन यू दिस। ओके, सो सेल्फ हिटिंग, बच्चे को आदत है हर टाइम अपने आप को मारने की, तो हम उसको सिखा सकते हैं कि भाई हैंड्स लॉक करके बैठा करो। जब भी वो हैंड्स लॉक करके बैठा है हम उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि जब हैंड्स लॉक है, हैंड्स अपने आप को लॉक रखना और अपने आप को मारना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो मैं अपने आप को मारूंगी या तो मैं मेरे हैंड्स लॉक करूँ। तो अगर एक बच्चे का बिहेवियर है अपने आप को ऐसे ऐसे मारने को, यू नो गोइंग ऑन टैपिंग सेल्फ लाइक दिस, तो हम उसको क्या सिखा सकते हैं, ऐसे हाथ में रखने। और जब भी वो ऐसे हाथ करके बैठा है हम उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे बैठना इंक्रीज होगा और इस तरह से हाथ मारना डिक्रीज होगा। प्राजक्ता, सी क्राइंग बिहेवियर ऑब्जर्व, अभी एक क्राइंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक बिहेवियर का क्या हमको देखना है, फंक्शन। तो बिना फंक्शन के हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एवरी बिहेवियर, चाहे वो बिहेवियर आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, ये बच्चे कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, हर एक बिहेवियर का एक वजह होती है।
आज मैं यहाँ बैठ के आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इसकी भी वजह है, क्योंकि आप लोग सबको सीखना है। तो हर एक बिहेवियर का वजह होता है। तो अगर एक बच्चा कॉन्स्टेंटली क्राई कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, पहले वो फाइंड आउट करके ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते प्रोग्राम। ओके ओके सो what I'm sorry, ma'am. यस So it was observed in a setting where the child at home, at other places, anywhere the child would be, the parents could not find out the reason behind the behavior the child was showing, which the is crime, like just crime. keep on crying, constant crying, and that would make anybody feel really bad looking at a child. Is like the mouth is all salivating, the nose is running because of the constant crying. The child is full red due to the And um, it is happening in all conditions. excess in all conditions. So at such case, see, ethically, what Yeah. we have to do first is, see if there is some like this behavior which is happening every time. The first thing, human nature, go check up if the child has any physiological, biological problem. पहले उसको rule out करो. Always. First rule out that, then look into the behavioral part. Yeah, Okay. it was ruled out. Yes. So then Yes. it has to be some. You have to look at all the other environment. क्या था वो उस room में, क्या है, क्या नहीं है. You know, somewhere something must be different that is creating the problem. We'll have to study that very child specifically. We'll have to go into the details because Okay. there is no. If there is constant crying, biological, physiological, everything is ruled out, then definitely you will have to look at their other variables which is there in the environment which could be affecting the child. Okay, these kids are do have their Unfortunately, it was like even after 10 sessions, therapists also could not find out. Parents also couldn't reach to a conclusion, and they had been to multiple therapists even before that. So, despite of doing sensory integration therapy, despite of doing all the other possible therapies, there was this behavior which was seen in the child for a very long period of time. So, yeah. we'll have to look into get a lot of more details Mm-hmm. from the parents, from the Mm-hmm. caretakers to really understand what is it. Right, Iptisha, right. Ipshita, is it right? Because we need to, Anji, I agree with you to go back. Radhika, it yes, sounds like you guys tried a bunch of things, and I think the first thing would be to still try and figure out a little bit more Yeah. more about about. What possibly could be the function of the behavior. If you're thinking about an alternative to crying, I don't know if this question is coming up since we're talking about DRI. So if you're thinking about maybe is there an alternative incompatible Right, behavior? right, right. I would think if there is any way to engage the learner, right? If you're engaging the student in any sort of, like, for instance, is the student like singing rhymes? And that's the time when they're not crying. So you start maybe like singing a rhyme with the student, and the minute the student starts responding, you give like a lot of like reinforcement for singing or like, interacting with you in a non-crying voice. And then that's the incompatible behavior that you start reinforcing. Again, this would only be Yeah. in a circumstance where you are not sure what the function is, and if you've tried everything else. So I don't think it's right And for there any of is us. there is no biological Correct. this. Then this is Yeah. Once you've the ruled best out you all can of do. it, Yes. but from a purely hypothetical situation, if we are trying to think of a incompatible behavior to crying, I would think anything that it requires a conversational exchange. So anything, any sort of singing, talking, answering questions, responding to so like responding to questions and all again can be aversive because children Yeah. don't necessarily like. Mm-hmm. But singing rhymes is something which is fun, or even putting on the child's favorite song and singing along to that. So if they're doing that, then they're not crying. And then that's the behavior you reinforce. Okay, so Because I take a key as when they are not crying, you have to be more
So you can't acting and you can't be quiet and you can't cry. Correct. Okay, so for that small child I'm talking. Okay, not for adults Yeah. we can do, but for a small child, definitely crying is associated with some sound. Okay, so once the sound is not there, and that is that particular behavior you need to reinforce. Can I add That's something? Okay. Yes, please Can go I ahead. add something? So I work for the Spastic Society of Karnataka, and I worked with many children with different disabilities. So worked with one boy with cerebral palsy, Prajakta, very similar to what you were saying. He used to, he would not cry when he was outside the classroom and when no demands were put on him. When he was allowed to do whatever he wanted to, there was no crying at all. But the moment he entered the classroom, he would start crying. But he would stop when, in fact, because Ipshita said that, I sort of got reminded of him whenever we would sing to him. So if you taught him anything through rhymes or through music, he would stop crying immediately. But the moment the music stopped, he would start crying again. So it became a sort of pattern which we had to break. So we started, singing and doing rhymes, and then 5 minutes intersperse it with teaching him something without a rhyme, and then immediately going back to the rhyme or the song, So it was a lot of trial and error, but finally we found that he was able to sit and learn whatever we were trying to without continuously singing or saying rhymes to him. So he still learns better through music and rhymes, but we can intersperse it with periods without rhymes and music where he will not cry anymore. It's taken a lot of trial and error, but we have finally managed to do that. And I think that's such a great example of essentially using reinforcement and then fading it off. So like, I think you guys were able to identify that singing was what was reinforcing for him. And then like, slowly like fading it out by increasing the duration of time when you were not singing, but quickly followed by singing, what an absolutely fantastic example to use. Yeah. So actually, Rajita, you could look at something what is, ma'am. kind of reinforcing for the child. yeah. So Rukmini, what you are using So I think is what I have tried. Vijeta was telling in terms of the Premack principle this morning, or Yes. the grandma's rule, or Yeah. the high P, low P, and high P kind of sequence. Yes. Sometimes using a momentum or the grandma's rule, or interspersing between the two. Yes. One thought that would be in terms of incompatible behaviors, we only think of sound with sound, but you could also think of blowing, playing with the raspberries where you go like that. Yeah. So you could do the incompatible behaviors can also be more vegetative. So they can be, toots that you blow. So if you are blowing, you can't cry. True. You know how they say, and if you are whistling, you can't cry. If you're singing, you can't cry. If you're chewing, you can't cry. If you're drinking, you can't cry. So don't think of incompatible behaviors as just exact opposites. They're not always exact opposites. They are two things that cannot be done together to each other. So opposite of crying is not crying, or stopping or quiet. So looking at vegetative incompatible alternatives is also a very good thing. In children who have sensory difficulties, when the eyes are engaged, the mouth stops. When the mouth is engaged, the eyes stop. So there is sometimes this that can be used to our advantage. Like if you have a child who's crying and you give a visual, that suddenly, because another sensory system is engaged, you get a incompatible quietness, So you could also use other prompts like the visual prompts to gain quiet, but blowing would be an incompatible behavior, or chewing would be an incompatible behavior, or playing with your finger on your lips. Sorry, my camera doesn't turn on, but when we do with your finger on your lips, the one that we play raspberries with children, those are all incompatible to crying. Giving a kiss is incompatible to sometimes crying. So when you're crying and you want to give a kissy, you have to stop and then you have to give a kiss and then you can start crying again. So think of incompatibility that way. Yeah, ma'am, a lot of suggestions, and thank you so much for all the alternatives that you could give.
There's one more question that I want to know. The consistency of doing this trial and error, do you believe that there should be some limits, or it can like go on? Because there are certain cases where it takes really very long, and there are certain cases where it can just happen in a session itself. So, do you believe that there should be something which you can like suggest to follow? Priyanka, will you be attending? I can, Yeah, please. I mean, Prajakta, you've put on a debate which we could debate on all day, right? When is it That's enough? really. All right, some thoughts around it, but not an answer to your question. Okay. One, age of the child, how long the behavior has been lasting, a better data suggesting percentage change. Like instead of trying to see crying goes to 0, you try to see if crying is going, when we are taking data, and if we take partial interval data, if it going down by 10%, 5%, if you're seeing an upward trend, even if it is a very, very gradual upward, and when I'm saying upward, I'm talking about improved behaviors like less crying. So, you know, if the crying is reducing by say 10%, well worth trying another week. If you're seeing a very, and this is varies from age to age, in a very young child, I think if you don't see differences, there is one, and then a very anecdotal, I have driven an anecdotal kind of a guideline is, if you don't see something, any percentage difference in 3 weeks on a particular strategy, then you're definitely not in the right space. How many strategies can you keep trying every 3 weeks review, 3 weeks review, 3 weeks review? What I've seen in my personal space is that if I can't see any difference in about 6 weeks using 2 or more strategies, I will call in a colleague or a help or a person who has either more experience or sometimes even less experience, but deals specifically in that age group or in that particular, somebody that I trust in terms of how they manage behaviors. I call in help. So even at my age, where I've practiced for the last 15 years, if I don't see something in 6 weeks, a percentage change, and I've used 2 or 3 strategies in my bag, I will actually step in and ask somebody for help. I think one of the biggest things that I would recommend here in problem behaviors is always have a strong support network group and say, I'm not able to make a difference. Am I missing something? So, that professional group is a very good idea to have. In children with cognitive delays, where there are IQ deficit or contingency difficulties, means you are doing it, you're doing it right, you've thought of it in many ways, functionally correct, you're reinforcing correctly, but sometimes when you have cognitive delays, the contingency actually doesn't come easy. In those cases, sometimes we've continued for longer, but definitely never ever more than 4 weeks or 6 weeks. Like, that's my upper limit of patience of trying something. Because if you're doing it right and you're breaking it down enough and you have good strategies and you've understood the function, the effect should come within 3 weeks in 5% or 10%, but you have to take data for that. 5%, 10% difference is not visible always to a naked eye. It's visible in the data, but it's not visible to a clinician or to a parent. But it allows you to continue a good strategy for slightly longer. You might be just at that switch, but sometimes we get so afraid and say, kuch nahi ho raha, and hum chhod dete hain apne bachon ko. But that percentage difference can actually guide you to continue and tweak and modify and, grow it into a useful space. So long answer to a very
difficult question and yet possibly not an answer, but those are thoughts around it. Thanks, Priyanka. Okay, so I think differential reinforcement of incompatible behaviors is clear now. Let's move ahead. Atmika, yeah. So here are a few examples. Okay, which I think we have already gone through them. So not able to reach out for cookie on cell. Tom starts screaming. Mom immediately removes one cookie and gives him. The minute DRI, अब जब एक बच्चा scream cookie देख के scream कर रहा है, okay. So instead of, and every time in the past, mother has always given cookie जब भी वो scream करता है. तो जब DRI करना है, तो याद रखो scream. तो हमको एक इस तरह का behavior करना है जो screaming भी नहीं, scream भी नहीं हो रही, but at the same time he's using his vocals. So the best that we can do is to teach him to say cookie, because that is there in his repertoire. So the minute he starts screaming, mom prompts him to say cookie and offers him the cookie. So saying cookie increases and screaming decreases. Okay. And इसी के तो videos हमने देखे थे, अभी उसमें भी देखो बच्चे, the girl, the minute the teacher ने बोला head touch करो, उसने रोना चालू किया. तो रोने के बदले टीचर ने क्या बोला उसको, ऑल डन बोलो. तो उसने ऑल डन बोला, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्ची ने सीखी क्योंकि जस्ट से ऑल डन. एंड बट क्योंकि ये DRI में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो क्राइंग एंड टॉकिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. तो दैट इज व्हाई इट्स कम अंडर DRI. Iftisha, next slide. This is a video for DRI. Good job getting things. Okay, can you just pause? You're doing a wonderful job. So इस वीडियो में क्या होता है, the minute teacher बोलती है कि page turn करो, तो the girl puts the hand in the mouth. तो अब we want to get that behavior of putting hand in the mouth not to be there when the teacher says turn page. So what is the replacement behavior? We are teaching her to keep the hands occupied. Okay, तो उसके hands अगर busy रहेंगे, तो जब teacher बोलती है turn page, उसका हाथ मुंह में नहीं जाएगा. Artika, you can play. Here you go, sweetie. Wow, it's fun doing the fidget. All right, class, let's open up to page 2. Get the fidget. Anna, get fidget. Great job, Anna. Look at that fidget go. Awesome. Okay, class, now we're going to work on page 3. Fidget. Nice work. Nice work, Anna. Doing that fidget instead of biting your nails. That is so awesome. Good deal. All right, class, now it's time to work on page 4. You did it all by yourself. Look at you go with that fidget. Yay! So I hope ये वीडियो से it's very clear to you all कि किस तरह से incompatible behavior को हम by using DRI we can reduce a few behaviors and teach an appropriate behavior. Okay, Atmika, next slide please. Okay, now बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को DRA and DRI जो हमने दो तरीके सीखे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जानना. जब भी आप DRA या DRI करते हो, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी जानना है कि उस बिहेवियर का वजह क्या है. Okay, what is the function
ओके, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड होते हुए हम एक दूसरा अप्रोप्रिएट, सही अप्रोप्रिएट बिहेवियर ढूंढे, चाहे वो ऑल्टरनेटिव हो, और अगर बिहेवियर इस तरह का हो कि जैसे अभी हाथ मुंह में डालना, तो बेटर टू टेक एन इनकम्पैटिबल बिहेवियर. सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन हम एक ऐसा बिहेवियर ढूंढे जो सही हो, ऑल्टरनेटिव सही हो, या इनकम्पैटिबल सही हो. फिर उसके बाद हमको कंट्राइव करना. अभी जैसे वीडियोस में देखा, घड़ी घड़ी वो पेज टर्न करने बोल रही है, इमीडिएटली वो दूसरी प्रॉम्प्ट करी कि उसके साथ खेल. तो इस तरह से घड़ी घड़ी सिचुएशन क्रिएट करना है ताकि वो बिहेवियर सामने आए एंड उस टाइम हम उस बच्चे को गाइड करें कि नहीं ये करना चाहिए, एंड जब वो दूसरा बिहेवियर सही बिहेवियर करे उसको रीइंफोर्स करें. तो कंट्राइव सिचुएशंस टू टीच द सेम, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ही बच्चा सीखेगा कि अच्छा ये मुझे करना है, ये करने से ही मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, not by that inappropriate behavior. Okay, clear this doubt? So next slide. Okay, next is DRO. DRO, differential reinforcement of other behavior, दूसरा behavior. Okay, तो यहाँ जो हमारा टारगेट बिहेवियर है जिसको हमको कमती करना है, वो बिहेवियर नहीं होना चाहिए. उसके अलावा दूसरा कोई भी बिहेवियर हो, उस दूसरे बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करेंगे. ओके, तो फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी प्राजक्ता ने बोला था कि वो बच्चा एवरी टाइम रो रहा है. ओके, ना इन केस अगर हम DRO अप्लाई करें तो एनी बिहेवियर अदर देन क्राइंग वो करेगा, हम उसको रीइंफोर्स करेंगे. Okay, so the minute he's crying, he keeps quiet, he looks here, maybe we can do something what he likes. Maybe we can sing for him, whatever it is. So any other behavior other than the target behavior that we want to reduce. So differential reinforcement of other behavior, procedure for decreasing problem behavior in which reinforcement is delivered whenever the problem behavior has not occurred. हुआ नहीं, जो टारगेट बिहेवियर है वो हुआ नहीं है उस स्मॉल इंटरवल में जो हमने सेट किया है. ओके, सो प्रोवाइड, इसमें बहुत जरूरी है याद रखना कि हम रीइंफोर्समेंट फॉर नॉन अकरेंस ऑफ बिहेवियर दे रहे हैं. आई विल कम बैक टू यू नीतू. ओके, रीइंफोर्समेंट फॉर नॉन अकरेंस ऑफ बिहेवियर दे रहे हैं. DRA और DRI में हम रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखा रहे हैं, या हम सिर्फ वो बिहेवियर नहीं हो उसको हम सिखा रहे हैं, तभी हम रीइंफोर्स करते हैं. एनी अदर बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड एज अ टारगेट बिहेवियर इन द गिवन ड्यूरेशन. ओके, इट इज अ टाइम बेस्ड प्रोसीजर. टाइम बेस्ड प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि हम बच्चे का बेसलाइन लेके हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इतना हर 10 सेकेंड्स में अगर बिहेवियर नहीं होगा तो हम इसको रीइंफोर्स करेंगे. तो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द चाइल्ड डूइंग एवरी टाइम गोइंग अप इन द क्लास मिस 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 ऐसे. तो हमने बेसलाइन लिया और बेसलाइन से हमने एवरेज निकाला कि 10 सेकंड तक वो बिना मिस बोले बैठ सकती है. तो अब एवरी 10 सेकंड वो खड़े रह के मिस मिस या मिस मिस कॉल आउट नहीं करेगी तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे. शी डज एनीथिंग एल्स, it's okay, but she will not move on a seat and say miss miss miss. So we are reinforcing any other behavior other than that miss 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 miss. I hope it's all clear. So let's take one more example, self hitting. So if the child का baseline लिया, उसमें baseline में हमको पता चला अच्छा 1 मिनट तक वो hit नहीं कर सकता है, तो अगर 1 मिनट वो वो 1 मिनट जहाँ उसने अपने आप को नहीं मारा, कुछ भी और करे इट्स ओके, पर मारा नहीं, उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा. और अगर उस 1 मिनट के अंदर उसने अपने आप को मारा, हम टाइमर वापस सेट करते हैं. ओके, सो दिस इज DRO. सिमिलरली वी कैन वर्क ऑन वोकल स्टीरियोटाइपी आल्सो. देख, हमको बेसलाइन लेना है कि इतना देर में एक वर्ड से दूसरा वर्ड बोलता है, एंड देन उसका बेसलाइन से एवरेज निकाल के उतना सेकेंड्स वो नहीं बोला तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे. सो दिस इज DRO.
Maybe he can sing, maybe he can do anything else, but he should not be talking any irrelevant sentences. He can ask questions, he can sing a song, but he should not talk irrelevant things. Okay, next slide, Atmika. Okay, any other behavior is reinforced. Okay, self-repeat. Now, limitation of DRO. There is only one limitation of the main limitation of DRO is you are reinforcing any other behavior. तो अब यही एग्जाम्पल ले लो, हम इस लड़की जो क्लास में मिस 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 करके कर रही है, उस बिहेवियर को रिड्यूस करना चाहते हैं. तो DRO अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, so every time she's sitting down 10 seconds without doing miss, 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 or moving on the sit and saying miss, 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 we are reinforcing. So she should be doing any other behavior. पर उस any other behavior में अगर वो जोर जोर से मारी टेबल तो we have to reinforce. So DRO का सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि at times, you know, कोई गलत behavior भी reinforce हो जाता है. So you have to be very careful when you are applying DRO and see what you can do best कि you are not, you know, किसी भी तरह से आप कोई दूसरा गलत behavior को भी reinforce नहीं कर रहे. Next आत्मिक. ओके, यहाँ वीडियो एक है जहाँ टीचर बोलती है बच्ची को कि यू आर गोइंग टू प्ले विद दिस बीड्स विदाउट थ्रोइंग, और एवरी 10 सेकेंड्स तुमने खेला विदाउट थ्रोइंग, तुमको you will get a reward, and she follows that. She can do anything else with the beads but not throw. Okay, Isaac, I'm gonna let you play with this for 1 minute. If you play with it correctly without throwing, you can get a lollipop, okay? All right, go ahead. So she can do anything but not throw. And the trainer is seeing the timer. Okay, that was 1 minute. Can you put it back in? Good job. During that duration, you could see that girl, Bale, she was playing with the beads. She was doing all that tongue movement, a little self-talking, you know, talking by herself was there. Now, we didn't want throwing. She did not throw, she got the reinforcement. But she also got the reinforcement for that facial movement she was doing, a little talking she was doing. So in DRO, that is the only thing that you need to be very careful. And when you're applying DRO, look at what are the other behaviors that possibly could be reinforced. Any doubts so far? Atmika, next slide, please. Okay. So now we have gone through DRA, we have gone through DRI, we have gone through DRO. Okay, you have gone through punishment, you have gone through extinction. So let's take one by one. एक एक करके हम लेते हैं. अभी punishment, अगर एक बच्चे को punishment दिया जाता है, तो क्या होगा? वो punishment मिला, उसके वजह से वो उधर punishment हुआ तो रोना चालू होगा, screaming चालू होगा. Similarly, आपने extinction burst, extinction में भी देखा है.
कि एक्सटिंक्शन बर्स्ट होता है, उस एक्सटिंक्शन बर्स्ट में बच्चे बहुत सारे नए नए बिहेवियर्स जो एट टाइम्स इंजurious भी हो सकते हैं, बच्चे करते हैं। तो पनिशमेंट ऑल्सो में ये प्रॉब्लम आती है, एक्सटिंक्शन में भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, बट बिहेवियर रिड्यूस करने के लिए हमको कोई तो तरीका चाहिए कि हमारा बच्चे का बिहेवियर भी रिड्यूस हो जाए, प्लस बच्चे ये सब बिहेवियर्स नहीं करें। दे डोंट लर्न, एक्सटिंक्शन बर्स्ट में काफी टाइम बच्चे, जब बच्चा रोता है, वो जब एक्सटिंक्शन बर्स्ट होता है, वो एट टाइम्स स्क्रीमिंग, फ्लॉपिंग, हिटिंग सेल, वो सब बिहेवियर्स भी करते हैं। तो ये सब नहीं झेलना पड़े, बच्चे को ये सब नहीं करना पड़े, बिना इसके हम कैसे ये बिहेवियर्स रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट को डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के साथ क्लब करेंगे, दोनों एक साथ दोनों को क्लब करके करेंगे, तो द टेक्निक जो है इज मच इफेक्टिव, रिजल्ट्स मच बेटर मिलता है उसमें। अभी एक्सटिंक्शन एंड पनिशमेंट अलोन आपने दोनों के साइड इफेक्ट्स देखा है, एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्शन बर्स्ट देखा है। नीदर एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट जब अलोन हम सिखाते हैं, वो आपको एक बिहेवियर रेड्यूस करने सिखाता है, पर अब अगर रेड्यूस कर रहा है तो करे क्या। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जो मैंने आपको दिया कि while playing on the ground, the girl pulls one of the girl pulls other girl's hair. ओके, टीचर ने तो उसको भेज दिया पनिशमेंट के लिए, पर अब वो पुलिंग हेयर क्यों की, क्या हुआ? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल शी वांटेड टू कम्युनिकेट, मे बी आई एम अज्यूमिंग कि वांटेड टू कम्युनिकेट समथिंग टू द अदर फ्रेंड, नहीं बता पाई, उसने बाल खींचा। ओके, तो when you are implementing such plans, you have to look at both all the aspects. तो अगर हम उसको जब बाल खींचे पनिशमेंट दे, पर जब बाल खींचने जा रही है उसको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज दे के उसको बताए कि अच्छा इस तरह से बोलना है, तो क्या होगा, वो डेफिनेटली अच्छे से बात करना सीखेगी अपने फ्रेंड से, एंड उसका ये बिहेवियर ऑफ पुलिंग हेयर रिड्यूस होगा। फिर भी अगर उसने पुल किया तो ओके, यू आर गोइंग आउट। Okay, so this both together will work very effectively. Very quickly you will see results in the child if you're having differential reinforcement with extinction. Let's take और एक example. तो जब भी मुझे चिप्स चाहिए, मैं टेबल बैंग कर रही हूँ, और हमेशा मेरी मम्मी मुझे चिप्स दे देती, जब भी मैंने टेबल बैंग किया मम्मी चिप्स ला के दे देती। अब प्लान है कि मुझे सिखाना है कैसे चिप्स मांगे रादर देन टेबल बैंग के। तो जब भी मैं चिप्स देखती हूँ, मैं जहाँ टेबल बैंग करने जाती हूँ, मुझे बोला जाता है बोलो चिप्स, मैं चिप्स बोलती हूँ, मुझे मिल जाता है। ओके, पर अब दूसरी बार जब मुझे चिप्स बोला गया, मैं चिप्स नहीं बोल रही, मैं बैंग कर रही हूँ। ओके, नहीं बोल रही हूँ। तो इस वक्त अगर हम एक्सटिंक्शन वर्क करें, ओके, सो व्हाट हैपेंस, द चाइल्ड इज लर्निंग मच फास्टर। अरे ये कर रही हूँ मैं, नहीं मिल रहा है, पर तभी चिप्स बोल दिया, मुझे मिल गया। So if we are practicing clubbing them together and doing it, making your plan in such a way that you are clubbing them and doing it, you will see the results be fast hoga. It increases the effectiveness of extinction and punishment. इसीलिए it is very good if you are combining procedures to reduce any behaviors, because punishment as such, first of all, it is that is a very सबसे लास्ट रिसोर्ट हम यूज करते हैं पनिशमेंट, जब हमको कोई भी दूसरे तरीके से दैट रिजल्ट्स नहीं दिखा फर्स्टली, तो हम पनिशमेंट पे जाएंगे। दूसरा, अगर दूसरे तरीके से बिहेवियर रिड्यूस नहीं हुआ एंड बच्चा अपने आप को या एनवायरनमेंट को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो पनिशमेंट पे। पर अगर हमने पनिशमेंट सोचा भी है, तो हमको इस चीज को बिना कंसल्ट किए, दो एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बिना हम पनिशमेंट नहीं दे सकते। So it is always better to combine extinction or punishment with some appropriate behaviors to get better results.
अभी हम हर टाइम हम बोलते हैं कि बच्चा, आई मीन आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल कि बच्चा यहाँ भाग, हर टाइम भाग रहा है, यहाँ से भाग, वहाँ भागते रहता है घर में. अब अगर हमको भागना रेड्यूस करना है उसका, तो हमको उसको दूसरा बिहेवियर सिखाना ही पड़ेगा. ओके, सो to reduce a behavior, you have got to build another behavior. And to build another behavior, what do we see? Which procedure to use? Either a DRA, DRI, or DRO. So one way you are building that behavior, another way you are applying extinction to the behavior that is you want to remove. Any doubts anywhere? I hope I am clear in explaining in Hindi as much as I can. Atmika, next slide. Yes, ma'am. Okay, so yeah, so this is the main reason कि whenever. Ma'am, excuse me. Yes. Yes. Ma'am, I wish to get an explanation on this DRA, DRI, Yes, yes. and DRA, yeah, DRO. I'm coming With to the that. same I'm coming behaviors, back. no, ma'am? No, I'll come back to you. I'll come back to it. Okay, 1 second. Let me Okay. just finish this part. Okay. So now that is the reason when you want to reduce behavior, you first see, can you do anything in the before the behavior, whatever is there, can you do any manipulations? वहाँ कुछ बदली करके क्या वो behavior reduce हो सकता है? मैं बात करी antecedent intervention की. तो अगर उससे हो सकता है तो very good. नहीं तो हम consequence change करते हैं. तो consequence change करने में हम भी apply DRA to see wherever, I mean, the differential reinforcement, to see what we can do best to get the change, reduction in the behaviors, inappropriate behaviors that we don't want. I think this is that explains the whole of differential reinforcement, how you can use it. Okay. Now coming back to you, Neetu. Your question is, ma'am, what is the difference between DRA and DRI? See, DRA and DRI, basically the first important thing आपको दोनों में देखना है कि DRA, DRI में पहली चीज है कि फंक्शन क्या है, ओके, वजह क्या है, ओके. उसके बाद आपको देखना है कि उस वजह के हिसाब से दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, ओके. अब वो ऑल्टरनेटिव DRA होगा तब जब आप उस ऑल्टरनेटिव आप ऐसा ढूंढते जो इनकम्पैटिबल नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइंग करी हूँ चिप से, मैं मांग सकती हूँ. दे आर नॉट इनकम्पैटिबल नहीं है. मैं ऐसे कर करके भी चिप्स, मामा चिप्स चाहिए, ऐसे भी कर सकती हूँ. बट इफ आई एम टीचिंग द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ बाइंगिंग डू चिप साइन, then that's incompatible because I can't do this sign and I can't do this together. Okay, both are same. It's just that the way we are trying to get the reduction of the behavior, it's going to be said as DRA or DRI. But for both, हमको function देखना बहुत जरूरी है. Can I add something to that? Yes, please. Yeah. So I think simply how I always try and understand it is that DRI is a type of DRA. So basically you can go ahead and you are anyway still reinforcing an alternate behavior when you're doing DRA. But if you are reinforcing an alternate behavior which is not compatible, then you're doing DRI. If you're reinforcing an alternate behavior which is compatible, then it's just a DRA procedure. DRA. So DRI is an example of DRA with only the difference being कि जो behavior है वो incompatible है. Incompatible. Okay, Neetu? Is your doubt clear? Any more doubts? Anyone? Atmika, have we done? Next slide, please. So, combination of 2 or more procedures for reducing inappropriate behavior, see either differential reinforcement with extinction or differential reinforcement with punishment. I have few examples I've just put for you to understand. Next slide, Atmika, please. So let's look at DRA with extinction. Tina is a 5-year-old girl, cries and flops on the floor.
whenever she wants to be carried. Okay, in past, parents have always carried her when she flopped on the floor. So what is the DRA that you're going to use? Whenever she wants to be carried, बच्ची जमीन पे पड़ जाती है and parents immediately आके उठा देते हैं. तो अभी हमको एक appropriate तरीका चाहिए सिखाने के उसको बोलने. So the minute Tina cries, prompt her to say carry me. जब वो बोलेगी उसको immediately carry करो. Okay? बट अगर वो नहीं बोल रही है और वो रोए जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम वो जो पहले अटेंशन देते थे उसको अटेंशन नहीं देंगे. Okay, so the procedure to give attention and carry her when Tina says carry, जब वो बोलेगी carry करो, हम उसको prompt करेंगे, बोलो carry me, और वो रिपीट करेगी, हम इमीडिएटली उसको कैरी करते हैं. पर अगर वो रिपीट नहीं कर रही है पर फिर भी रो रही गिर जाती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं. So what does the child learn? The child learns that it is better to ask carry me rather to cry and flop. तो यहाँ दोनों प्रोसीजर हमने एक्सटिंक्शन किया, वो नहीं बोल रही और रोते जा रही है तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया. हम तो एक्सटिंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम ध्यान दे रहे थे, अब हमने उस ध्यान को हटा दिया तो वो एक्सटिंक्शन हो गया. Okay, so this is DRA with extinction. Clear? Let's go to the next. Subbu was DRI with extinction. Subbu, a 6 years old girl, whistles when she sees an ice cream shop. Okay, in past, every time she whistled, parents stopped and bought her the ice cream. Okay, so जब भी ice cream shop देखती थी वो सीटी बजाती थी. Okay, सीटी क्यों बजाना? I mean, it doesn't look appropriate seeing ice cream shop and whistling. Okay, so the parent decided, okay, we need to teach her to ask for ice cream. So now what do they do? Whenever whenever she passes the ice cream shop, she's prompted to say, I want ice cream, or let's eat ice cream. And if she says, parents buy her ice cream. And if she does not echo and still whistles, parents do not offer the ice cream. Past में क्या कर रहे थे? वो whistle करती थी, वो लोग ice cream देते थे. अब वो whistle कर रही है, ice cream नहीं दे रहे. तो उसी whistling behavior को जो reinforcement पहले था उसको reinforcement नहीं दे रहे, बल्कि asking ice cream, I want ice cream, let's eat ice cream, वो बोलने पे ice cream दे रहे हैं. So that's a DRI with extinction. Clear? Next slide, please. Okay, DRO with extinction. Sarah engages in hand-to-mouth self-injurious behavior maintained by attention. So every time वो हाथ मुंह में डाल के काटने चालू करती थी, कोई ना तो कोई आके उसको ध्यान देता था, attention देता था, जो भी हो, चाहे खेलना हो या कुछ खाने को, कुछ भी दो, पर attention मिलता था. तो whenever उसका baseline ले आ गया कि कितना देर तक वो बिना हाथ मुंह में डाले रह सकती है, तो उसमें 2 minutes आया. So when Sarah has gone 2 minutes with no hand-to-mouth self-injurious behavior, her teacher provides a lot of praise. But when Sarah puts her hand to the mouth, teacher, without paying attention to her, sets the timer again. So every 2 minutes, baseline में पता चला 2 minutes तक वो बिना हाथ मुंह में डाले बैठ सकते हैं. तो फिर अब every 2 minutes जब वो बिना हाथ मुंह में डाले बैठती है, टीचर उसको attention देती है. जो attention पहले मिलता था काटने पे, अब वो attention मिल रहा है जब वो अच्छे से कुछ भी और नहीं कर रही है, कुछ भी और कर रही है पर हाथ काट रही नहीं. ओके, टीचर उसको attention दे रही है, praise दे रही है, पर जहां वो हाथ मुंह में काटती है, टीचर उसको ध्यान नहीं दे रही है और वो अपना टाइमर वापस स्टार्ट करती है. So praise and attention is given when Sarah's hands are occupied doing anything else but putting them in the mouth. Okay, if she puts her hand in the mouth, she gets no attention and the timer is reset. The behavior of mouthing her hand decreases. Okay, so I put in some examples here for with extinction. I think इससे आप लोग का ये differential reinforcement जिसमें DRA, DRI, DRO clear है. Any doubts, please आप questions पूछ सकते हैं. So I think everybody is clear.
So no doubts. Thank you everybody for being patient and understanding. We did our level best to explain जितना हो सकता है हिंदी में. I hope आप लोग सबको ये समझ में आया हो. Thank you very much. It's an honor to express gratitude towards you, madam, on behalf of everyone, for imparting so in us with your precious knowledge. And the team spirit of you people, like Priyanka man's, this team notes, like it's like enriching, sharing the knowledge is like without any limits. I don't have any words to say. You people's teachings will surely prove to be fruitful for us in the forthcoming days of our working environment. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you everyone. Have a good day. Thank you, Kelia. Thank you, everybody, for attending. Bye. Bye. So dear participants, I already shared with you guys the attendance link for the afternoon, and I'm sharing. I already shared the notes of today. You all can check your mail once, and I'm sharing you the evaluation link. Go through that and please do the assessment. And when you're done with your assessment, you can leave from the meeting, and the assessment link will be open only till 6:30. Ma'am, what is the pass mark?